next session that is exclusively for plant and machinery participants, and also some topics are common for land and building also. About Sanjay sir, a few words about Sanjay sir. Sanjay Patel sir is having 20 years of 20 years plus experience in the field of plant and machinery valuation. And with this, he has made him a trusted expert in the industry. He has worked with various industries, including power, steel, cement, pharmaceutical, textile, engineering, petrochemical, and infrastructure. His educational background includes a Bachelor of Engineering degree, which has equipped him with a strong technical foundation. To further enhance his skill in valuation, he has completed courses in customs, valuation laws, rules, and compliances, merger, acquisition, and corporate restructure and business statistics for managers. Apart from his professional work, Sanjay Patel sir is also keen to share. Sorry. Sanjay Patel sir is also keen on sharing his experience with others. He serves as an expert faculty for postgraduate courses where he imparts his knowledge and experience to aspiring valuers. Additionally, with his seminars for education purposes, keeping participants updated on the latest development and best practices in the field of plant and machinery valuation. Welcome back, sir, and please take the charge. Yeah, thank you. Yeah, welcome to all again. Today, as a part of the our syllabus decided by the IBBI, we will study the identifications of a plant and machinery. Okay, so as a valuer of a plant and machinery, first of all, anyone, what do you mean by the valuation? Valuation क्या है? End value at the after covering its lifespan. Sorry? End value. Valuation at the when we value the machinery at the end, that's the end value of the machinery. That's scrap value. Okay. What is the value then? Value the original cost price, including other charges, supply and fixing, or it is only supply. Depends upon that's the value. So, is there any relationship between the cost, price, and value? Cost price is the price at which we have bought it, and the value is at the random we evaluate it at what's the value now if we want to change the machinery or something else. That's the thing. Any relation? That is known. Okay, Depreciation. Cost means the amount required to create an asset. Simply. Yes. जो asset बनाने के लिए खर्चा होता है, it is called the cost. Price means of at amount which is transacted between the willing buyer and willing sellers. So your price normally higher than the cost, but it is not mandatory. Okay, price always will be a higher than cost. But many times price may be a lower than the cost also. Okay, so cost is a manufacturer side, transaction is a price is a transaction side. Now value, okay, it is an estimated amount where transaction may happen. Nowadays, as per the IBS, what do you mean by the value? So it is a valuer's quantitative. Okay, what is a quantitative? Valuer's quantitative conclusion end of the valuation process. Okay, and valuation is a process or act to conclude a value as on date of the valuation. Okay, so quantitative conclusion. Now quantitative means of, okay, there is a two term we have in a statistic, qualitative and quantitative. So quantitative means
क्वांटिटेटिव जो सम फॉर्मूला Quantity. न्यूमेरिक से डिराइव्ड किया गया है. Okay. So now what is the process in a valuation of the plant and machinery? क्या कैसे आप conclude करते हो from the beginning to end? So that depends on the purpose of valuation actually. Okay. So Yeah. for any one purpose. So basically we calculate from physical inspection and then we further. Okay, so one step, that is a physical inspection, or we can say it is a site inspections. Okay. Right. And after site inspection, we carry out few research, as per the market criteria, and further we depreciate we depreciate the asset as per the replacement cost new of the particular asset, and on the basis of that we carry out the whether is there any technical obsolescence, functional obsolescence, or economic obsolescence. There are a number of factors on which those obsolescence matters. Basically, that depends on industry to industry basis. Secondly, we also carry out whether what kind of maintenance the asset has been gone through in the previous uh, you know uh, during his lifetime, and on the basis of useful life we carry out all the calculations and working, and that is how we evaluate the final value for that particular asset. Okay. So first thing that you are conducting the site inspection or physical inspections. Before a site inspection or physical inspection, and you are getting engaged. Once you are appointed, then next step may probable you are making the site inspections. Okay. Once you are getting the engage, you demanding the documents, you are understanding purpose of asset, you are understanding the asset under the valuations, and between your client, there is a fixation of the remunerations. Well, it is your appointment. You are getting the engage where you are classifying or getting the some details. Then you are making the physical inspections. Okay. During the physical inspections, you are collecting the data about the asset. You may discuss with the technical person available on the sites. You may discuss with the financial persons and getting the data. Okay. Then you are making some market survey related to the valuation and related to the asset under the valuations. So now you have three types of data in your hand. One, that is a documented data provided by the client. Second, the data that you have collected during the site inspection or physical inspections. Third, you are getting them data from the market survey. Now, based on your engagement, scope of work, based on your asset under the valuations, availability of the data, you are selecting the approach. Which approach is best suitable? That may be a market approach, maybe an income approach, or maybe a cost approach. Under the approach, you are selecting the methods, and under the methods, you are making some numerical calculations and reaching at the conclusions. Okay. So this is the process of the valuations from your appointment to the getting the engagement, making the site inspections, collection of the data, discussion related to the assets. You are doing the macro identification and micro identifications. Okay, what do you mean by the macro? We will discuss during the chapter. You are collecting the data from the market survey, analysis of the data during the inspection and market से जो भी आपने collect किया है, you are selecting the approach and techniques of the approach and making some calculations and reaching at the conclusions. Okay. In this chapter, we are discussing about the what as a valuer we have to do at the time of site inspections. So बताइए, as a valuer, what we have to do during the site inspection? क्या करते हैं? So many factors, condition of the machine, life,
Okay. of the We are checking, assessing the condition of the machines. Then, machine, its life, how old it is, what are the original cost of acquisition, what's such a future prospect, whether it can be used for some other low level industry and so many other things factors will depend. okay. What will be basis for the site inspection? Site inspection करने के लिए हमें क्या required है? Okay. List of the machinery, sir. You are required the list of the machineries. Now, company, there is a large company or say big scale company which have not a list of machinery. Then, alternate option you have. And we search out the same same company manufacturer other sources. So Okay, just like basically, you are doing the valuation of the Reliance or Tata, there is a large plant, so they are not maintaining the list of machinery. सर उसका बिल होगा तो सही है. So any large scale company are maintaining their fixed asset registered. So may probable you get from the account side fixed asset register there where they are mentioning all the asset whatever they have purchased from the initiation or inception of the plant to the up to the date of valuation. अगर ये दोनों नहीं होगा तो you are not getting the listing of the machine, you are not getting the fixed asset register, then कंडीशन ऑफ द मशीनरी नहीं. We are discussing about the base. आप कैसे वेरीफाई करोगे? Okay, so may you get the fixed asset register where all the assets are mentioned with the date of the purchase and amount at which we purchased, may some quantity, may some the supplier. If it is a large scale company, if scale is a small scale company or a medium scale company, you may get the list of machinery with the technical specifications. And if it is a micro scale or small scale company, many times they are not maintaining fixed asset register or listing. So you have to make a physical inventory. You have to go to the machine to machine. If number of machine may be in range of the 50 to 100 machines are available. So you have to make a inventories after the site inspections. Okay. You have to do two type of identifications. One is a macro identification and another is a micro identifications. Okay. What do you mean by the micro identification? Anyone? We check the age. We Okay. check when they have installed the machinery. Okay. Model, serial number, Model, serial number. capacity How of much, the machinery. Is a Okay. technical specification of the machine. So, in short, just understanding, micro identifications means of you are collecting the data or informations about the asset or say machine. मशीन का नाम क्या है, मॉडल क्या है, टाइप क्या है, सीरियल नंबर क्या है, साइज क्या है, कैपेसिटी क्या है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, एज क्या है, कब परचेज किया था, कब इंस्टॉल किया था, फाउंडेशन है कि नहीं, कैसे चलता है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, ये सब. सो micro identification, that is we are collecting data related to the machine or the subject asset under the valuations. Okay. Second data that you are collecting identification is a macro identification. Anyone? What do you mean by the macro identification? Actually, sir, what is the process? प्रोसेस क्या है उसका मतलब built up? प्रोसेस कैसे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, After processing, what is the turnover? मतलब उसका टर्नओवर क्या है, पैसा कितना कमा के देती है. right, sir. सही है. सो मैक्रो आइडेंटिफिकेशन मतलब यू आर कलेक्टिंग डेटा अबाउट द कंपनी रिलेटेड टू द एसेट. ओके. उसका प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है, प्रोसेस लेआउट क्या है, लाइन ऑफ प्रोसेस क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शंस क्या है, रॉ मटेरियल अवेलेबल
है कि नहीं, यूटिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड क्या है, गुड्स की मार्केट डिमांड क्या है, कितने शिफ्ट में यूज होती है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं, मेंटेनेंस रिकॉर्ड क्या है, एसेट टू फिक्स एसेट टर्नओवर क्या है, फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, एंड रेगुलेटरी मेजर्स. व्हाट यू मीन बाय द रेगुलेटरी मेजर्स? Like sir, Electrical guidelines inspection. regarding It its is use related after to its life. compliance. Guideline regarding its life. Safety, safety. Compliance of एक मिनट, एक दिन, प्रदीप सिंह. Yes, Yeah, sir. प्रदीप सिंह It जी. is related to I think compliance उसका मतलब क्या है मार्केट डिमांड में, मतलब मार्केट में, तो रेगुलेटरी मेजर यही हुआ. Safety Okay. regulations. या बोलिए. थिरूर Safe, गंगम. yeah, safety regulations. Okay. Anyone else? The pollution, it's- regarding the pollution control board regulatories. Okay. Then So electrical regulatory inspectorate. measures मतलब all norms, the, norms imposed by the government. yeah, all the statutory permissions, license, agreement required from the local, state, or central government. It may be related to electricity, it may be related to the pollution, it may be related to other storage materials, it may be related to the influent, it may be related to the workers or any. सही है. जो भी परमिशंस फैक्ट्री रन करने के लिए चाहिए, दैट इज अवेलेबल और नॉट. सो मैक्रो आइडेंटिफिकेशन मतलब यू आर कलेक्टिंग डेटा related to the company, its product, process line, install capacity, and all. Okay. What is the importance of micro identifications and macro identifications? Okay. I think so. You have studied the three approach. How many approach are there, and which are approach? वैल्यूएशन के लिए कितने अप्रोचेस है? तीन है अप्रोच. कौन कौन से? मार्केट अप्रोच, इनकम और कॉस्ट. मार्केट, इनकम एंड कॉस्ट. सही है, राइट. तो बताइए, अप्लाई सम लॉजिक, ये मैक्रो आइडेंटिफिकेशन आपको किस अप्रोच के लिए हेल्पफुल होंगे, और माइक्रो आइडेंटिफिकेशन किस अप्रोच के लिए हेल्पफुल होंगे? Why importance of the data collections? भाई हमने बोला कि you are collecting the data from the document, from the site inspections and from the market, and based on the availability of the data, you are selecting the approach. तो माइक्रो आइडेंटिफिकेशन एंड मैक्रो आइडेंटिफिकेशन किस अप्रोच के लिए सुटेबल रहेंगे? जैसे भी पहले, हाँ, माइक्रो के लिए बताइए किस अप्रोच अडॉप्शन के लिए यू आर रिक्वायर्ड द माइक्रो आइडेंटिफिकेशन. कॉस्ट अप्रोच के लिए. कॉस्ट अप्रोच के लिए यू रिक्वायर द माइक्रो आइडेंटिफिकेशन. कैसे? तो सर इसके बीच में सारा कंपनी का नेम, मॉडल, किस एज, कब कब परचेज किया, परचेजिंग एंड ऑल सब कुछ उसमें रहेगा, तो माइट बी कॉस्ट अप्रोच इसके लिए रिक्वायर्ड होगी. सही है. जब कॉस्ट अप्रोच के लिए आपको, ओके, व्हाट इज द स्टेप ऑफ द कॉस्ट अप्रोच? एनीवन? अभी बताया था किसी ने पहले ड्यूरिंग द डिस्कशन. So manufacturing, yeah, the product cost. नहीं, फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द कॉस्ट अप्रोच क्या फाइंड करते हैं कॉस्ट अप्रोच में? सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, फिर उसकी स्क्रैप वैल्यू. रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं. हाँ, पहले फाइंड करते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट. या व्हाट इज द अदर ऑप्शन ऑफ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट? रनिंग कॉस्ट भी करती है, डिपेंड. We are finding the reproduction cost or replacement cost in a cost approach first. What is the second steps? Replacement cost find करने के बाद क्या करते हैं? रिपेयर कॉस्ट. रनिंग कॉस्ट नहीं, what do you mean by the running cost? Running cost, that is the operating cost नो. to operate the plant. इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस चार्ज. But मेंटेनेंस it के is लिए not सारा कुछ. part of the cost approach. It is a part of the income approach.
Second step जो cost approach में रहता है, after finding the replacement cost, it is a depreciation. You are providing the depreciations. Third steps, you are providing the obsolescence. You are deducting depreciation and obsolescence from the replacement cost, and you are getting the replacement cost minus depreciation minus obsolescence is equal to क्या बोलेंगे इसे? Cost approach. नहीं. Scrap. नहीं. It is called depreciated replacement cost, DRC. And this depreciated replacement cost is a value indications by the cost approach. Okay, DRC reflect the value by the cost approach. Replacement cost minus depreciation minus obsolescence. So when you are going to adopt a cost approach, so when you have all the micro identifications that will help you to adopt the cost approach. So वैसे ही even market approach, वैसे ही macro, when you are going to adopt income approach, your micro identifications will help you in this approach for the quantifications. What is the value? Valuer's quantitative conclusion. Okay. So during the site inspections, you have to make a macro identifications and micro identification. ये data आपको collect करना है. So how we are approaching for the site inspections? Okay. So you are going collecting the name of the machines with the technical specifications. You are collecting the data from the nameplates. You are observing physical conditions, wear and tear, and deteriorations. Okay. You are working atmosphere, surrounding atmosphere, skill of the operators. You are taking a usage, number of shift, status and record of the repair and maintenance, statutory permissions and license, lease-based, contract-based or rent-based machinery, scrap, surplus or non-productive machineries, machinery that can be used with or without repair. So आपको ये सारा डेटा कलेक्ट करना है, मतलब आइडेंटिफिकेशन एसेट क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, that you are collecting during the site inspections. Okay. Group of asset. After collecting site inspections, you have the listing of the machines. So you can classify this asset, okay, in a process machinery or production machinery, the machinery which are directly engaged in the production. Core machinery. You can classify as a utility, the machinery which help or enhance the availability for the production, just like a boiler, cooling tower, yes, utilities machinery, air compressors. Then electrical installations, that may be a substations, control panels, switch gear, transformer, cable, control systems and panel that control entire process piping, mainly in a chemical plant or pharmaceutical plant or crude oil plant or any plant which processing the liquids, foundations if any required, supporting structures that may be a ladder, platform, catwalk, material handling equipments, laboratory and testing equipment, workshop tools, special equipments, just like a just jig fixtures, tools, and software or IT equipments. Okay, so these are the machinery, yeah, class of the machines that you find during the site inspections. Now, when you are making the site inspections, what is the importance of the technical specifications? Yeah, collection of the each and every technical specifications. Okay. So just like you have getting a name, 700 liter SS reaction vessel with a stirrer. Is this information is enough
for valuation process to find the replacement cost or reproduction cost or to adopt the market approach? Yes or no? आपके पास इतना नाम दिया है भाई, 700 लीटर एसएस रिएक्टर No, vessel sir. Actually required for a particular name and what is the reaction in this the reactor. It is mandatory to know that. सही है. So what other data required? First, that is a 700 liter. What do you mean by the 700 liter? SG. It is a process capacity or a water capacity of reaction. It is a reaction capacity, sir. It may be a reactor. So we have to require clarifications. Yes, yes. So it is a process capacity, reaction capacity, or total capacity of the reactor vessel. And second, that is a yes, sir. What is the raw material entered in the vessel, and what is the outgoing in the final product? Is two things. What is the input and what is the output? Yes. Yeah. Then assets. Which type of assets? Okay, there is a number of types of assets, just like 316, 304, 316L. Then it is a reaction vessel, so it is a jacketed vessel or non-jacketed vessels. If it is a stirrer, then which types of stirrer? And what is the MOC of stirrer? If it is a vessel, then what is the thickness of a plate? 8 mm, 10 mm, 12 mm. So all this data, technical specifications required to assess precise replacement cost or reproduction cost. If we have not enough data or not enough understanding, so you cannot precise the replacement cost. You cannot find the precise using the market approach. Okay, so each and every technical specification must be collected. You must identify your asset and the valuation precisely. Okay, then what will be a second? Discrepancy. Okay, जब भी आपको लिस्टिंग दिया गया हो और या फिक्स एसेट रजिस्टर दिया गया हो कि भाई जाओ फिजिकल वेरिफिकेशन कर दो, तो क्या हो सकता है? दो चीज हो सकती है सिंपली. एक तो मशीन लिस्ट में है पर साइट पे नहीं है, या साइट पे है और लिस्ट में नहीं है. सही है. सो एक चीज जो है कि भाई एसेट फिजिकली एग्जिस्टेंस ऑन द साइट बट नॉट अकाउंटिंग रेफरेंस अवेलेबल, लिस्टिंग में नहीं है, साइट पे है. सो ऐसा क्यों हो सकता है भाई? एसेट को सेल्फ मैन्युफैक्चर किया गया है विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसिस. ओके, ऐसे स्टील प्लेट ली थी और स्टील प्लेट को विद इन फैक्ट्री ही टैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है. या पॉसिबल है कि भाई मशीन को मॉडिफाई कर दिया गया है. सही है, लार्जर नंबर ऑफ टैंक आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर टैंक्स. या कई बार अकाउंटिंग पर्पस पे क्या होता है कि कॉस्ट ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस. भाई एसेट खरीदा था, मशीनरी खरीदा था, बट अकाउंट में क्या बोल दिया गया, ये तो डे टू डे खर्चा है, इट इज नॉट एसेट. तो आपके फिक्स एसेट्स रजिस्टर में ड्यू टू सर जीएसटी पर्पस एंड समथिंग एल्स. जीएसटी पर्पस एंड मैनी. ओके, दे आर परचेजिंग द वायर या मोटर. ओके, तो they are treating as a day-to-day expense है. So maybe a GST or due to the lack of knowledge to the accountant जो भी financial reporting कर रहा है वो. Then that may be a asset on the lease basis or otherwise belong to sister concern and put in use. Asset को rent पे या contract पे लिया गया है, so asset physically available है, but आपके listing में नहीं है क्योंकि it is not owned by the company. इससे उल्टा कि भाई एसेट
existing in a listing or account but physically not available. एसेट लिस्टिंग में है बट फिजिकली नहीं अवेलेबल है, तो एसेट को मे बी स्क्रैप्ड आउट कर दिया गया है, या एसेट लेइंग आउटसाइड प्रीमाइसेस फॉर द रिपेयर पर्पस, तो एसेट को रिपेयर करने के लिए बाहर भेजा गया है. एसेट इज ऑलरेडी सोल्ड आउट, पर उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीट नहीं किया गया है. एसेट को रेवेन्यू टाइप एसेट थी बट इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंसेस, या asset is given on the rent or lease and laying outside of the premises. Asset books of account में listing में है but किसी और को rent पे दी गई है या leasing कर दिया गया है, so you are not finding on the sites. Okay, so what you have to do during the site inspections, first collect the each and every data related to the asset, that is the micro identifications. Collect the each and every data related to the company, this is the macro identifications. Whatever the discrepancy arised with the discussions of the technical team or financial team, remove this discrepancy and prepare a list of assets or machine which you are going to value. Okay. So finalization of the listing for a valuation purpose. Listing of installed and uninstalled machinery laying at site by physical and by site पे कितने machinery available है. Out of this, few assets are not belongs to the company, but which is still available on the sites. Compare the physical listing with the fixed asset register or listing. Discuss on the discrepancies available on the site and not available FR, or available in the FR, not available in the site. जो भी दो discrepancy है उसको discuss कीजिए. Finalize list with the addition and deletion. Okay. And आपके जो फाइनल लिस्ट बनता है उसमें से आइडेंटिफाई योर एसेट एज अ प्रोडक्टिव एसेट, नॉन प्रोडक्टिव एसेट, स्क्रैप, सरप्लस, ऑफ बैलेंस एसेट्स और मशीनरी दैट कैन बी यूज्ड और विदाउट रिपेयर. कई बार रहती है सम ऑफ द मशीनरी इट इज आउट ऑफ प्रोसेस बिकॉज आज की प्रोसेस में इट इज नॉट मैंडेटरी और नेसेसरी टू पुट इन द प्रोसेस लाइन. या कई बार ऐसा होता है कि कुछ मशीनरी आर अंडर द रिपेयर, सो आउट ऑफ प्रोसेस हो जाती है. ओके, सो ऐसी मशीनरी भी फाइंड कीजिए, भाई ये मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन बट ड्यू टू सम रिपेयर एंड मेंटेनेंस इश्यूज इट इज आउट ऑफ प्रोसेस. आफ्टर रिपेयर वी कैन रीयूज इट, या now it is a totally out of service and is going to the scrap in a future. Okay? So this is a entire process for making a inspection and identifications. क्या क्या करना है, क्या क्या डेटा मांगना है. तो एक सिंपल क्वेश्चन, what data you will require from your client. आपको क्लाइंट बोलेगा भाई क्या डेटा चाहिए, तो क्या मांगोगे आप उससे? Fixed asset register, FAR. First is a fixed asset register, then Sir, fixed asset register along with technical specifications of the assets, capitalization date, gross block, list of imported assets if any, and maintenance breakdown if they have done anything in the past, and invoice of major machineries. सही है. तो अभी इन शॉर्ट हमें बोलना हो तो वी विल हमारे क्लाइंट से बोलेंगे भाई वॉट एवर वी स्टडी इन द माइक्रो आइडेंटिफिकेशन एंड मैक्रो आइडेंटिफिकेशन, भाई इतना डेटा मुझे चाहिए. ओके, आपके माइक्रो आइडेंटिफिकेशंस में ऑल द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द मशीन्स, साइज, मॉडल, एज, फाउंडेशन, ड्राइव. आपके मैक्रो आइडेंटिफिकेशन में इंस्टॉल कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोसेस लाइन, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, फिनिश क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, रेगुलेटरी मेजर, फाइनेंशियल रेशियो सब आ जाएंगे. तो ये सारा डेटा आपको अडॉप्शन ऑफ द अप्रोच एंड मैथोडोलॉजीज में विल हेल्प यू. सही है. नाउ
व्हाट यू मीन बाय द प्रोडक्टिव एसेट, हमने बोला भाई लास्ट में, you can classify your asset as a productive asset, non-productive asset, surplus asset, scrap asset, or off-balance sheet asset. What do you mean by the productive asset? And what do you mean by the non-productive asset or surplus asset? प्रोडक्टिव एसेट सर जिसमें प्रोडक्शन अभी इन्वॉल्व है, जैसे मतलब प्रोडक्शन हो रही है, जनरेट प्रॉफिट एंड सम मतलब कैश फ्लो हो रहा है। और नॉन प्रोडक्टिव वही है कि स्टैंड बाय और जिसमें मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रही अभी। नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते स्टैंड बाय इज अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट। ओके, प्रोडक्टिव एसेट मींस ऑफ all the asset held for the use for the production of goods and services, which is ability to generate profit and cash flow. ओके, तो आपकी सारी जो कोर मशीनरी होगी, यूटिलिटी मशीनरी होगी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होगा, कंट्रोल सिस्टम, इज ऑल द विच इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, these are your productive assets. तो नॉन प्रोडक्टिव एसेट किसे बोलेंगे? which are not involved in a production and used for the supporting facilities. जैसे किसी फैक्ट्री में जाते हो और दरवाजे सिक्योरिटी गेट के पास ही एक वेइंग स्केल है ना, ये फंक्शन क्या है वेइंग स्केल के? भाई इनपुट को मेजर करना, आउटपुट को मेजर करना, मतलब फैक्ट्री के अंदर कितना माल आया, फैक्ट्री से बाहर कितना गया। सो दिस वेइंग स्केल इज अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट हेल्प इन अ प्रोडक्शन। आपके सारे जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, okay, समझ लो ट्रॉली है या पैलेट्स है या वॉकी टॉकी है या जो भी है, कैन है, प्लेट है, दिस ऑल आर द नॉन प्रोडक्टिव assets which are not part of the production facilities but help in a production facilities. Okay, what do you mean by the surplus asset? सरप्लस एसेट देखिए, मतलब आपका जो स्टैंड बाय पंप है या स्टैंड बाय मोटर है, इसे आप नॉन प्रोडक्टिव नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई 8 घंटे ये चलेगा, 8 घंटे ये चलेगा, उसको सर सरप्लस बोल सकते हैं आई थिंक। नहीं, इसको सरप्लस नहीं बोल सकते। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, क्योंकि आपका प्लांट कंटिन्यूअस चलाना है, दैट्स व्हाई आपने स्टैंड बाय रखे हैं, क्योंकि यू मे यूज इट अल्टरनेटिवली या यू मे वन देयर इज अ ब्रेकडाउन, आपका प्रोसेस बंद ना हो, इसीलिए आपने उसको स्टैंड बाय रखा है। Yes, it is related to the production as well. It is related to production only. Okay, what do you mean by the surplus? Anyone? तो सरप्लस एसेट सपोज जैसे 10 टन कैपेसिटी का हमारा प्लांट है, हमने और 20 टन के उसमें एसेट लगा रखे हैं, तो 10 टन जो में एसेट जो इन्वॉल्व है, दे आर ऑल द सरप्लस एसेट। नहीं, मतलब 10 टन का प्लांट है और हमने 20 टन कैपेसिटी के लगा रहे हैं, सपोज 10 टन पे अभी हम लोग प्रोडक्शन ले रहे हैं और हमारी इट कैपेसिटी इज अ 20 टन है। 10 टन इज अ सरप्लस कैपेसिटी। यस, ओके, सो इट इज अ मेनी टाइम्स ऐसा होता है भाई, चलिए हमने लगा दिया 20 टन का प्लांट, और प्लांट जब लगा दिया तो वी फाइंड दैट कि भाई देयर इज अ गुड डिमांड एंड हमारी बढ़ती रहेगी, बट 1-2 साल के बाद में क्या होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, और सारी फैक्ट्री आ गई है, या देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन द प्रोडक्ट, कंज्यूमर को हमारी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सो अब जो डिमांड है वो सिर्फ 10 टन की रही गई है। So though our plant is a 20 ton per day capacity, we are using a 10 ton per day only because of less demand in the market. So जो बाकी की 10 ton per day capacity बची है, it will be a surplus capacities. It is an example of the economic obsolescence. अब आप इसे खरीदना चाहते हो इस फैक्ट्री को, तो किस हिसाब से खरीदोगे? 20 टन के हिसाब से या 10 टन के हिसाब से? सारे मशीन्स तो 20 टन के हैं, पर प्रोडक्शन हो रहा है सिर्फ 10 टन, और फ्यूचर में भी ये 10 टन से बढ़ेगा नहीं, मे प्रोबेबल घटेगा, या वैल्यू कैसे करोगे? 20 टन हिसाब के या 10 टन के हिसाब से? 10 टन के हिसाब से। 10 टन के हिसाब से, सही है। तो सरप्लस एसेट क्या है कि those assets are not essential for the operation of the business by the company or productions of the goods and services.
उसके पास ऐसे एसेट पड़े हैं जो आज यूज नहीं हो रहे और इन फ्यूचर भी यूज नहीं होने वाले हैं, दिस ऑल कॉल द सरप्लस एसेट्स ऑफ द कंपनी। सही है? नॉन एसेंशियल एसेट्स विच आर नॉट इन यूज टुडे और इवन कंडीशन फ्यूचर में भी नहीं यूज होने वाले हैं, दिस कॉल द सरप्लस एसेट। नॉर्मली व्हेन यू आर फाइंडिंग द सरप्लस एसेट, सो भाई दो कंपनी का मर्ज हुआ या एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, ऐसे टाइम में जो एक्वायरी है उसको कुछ एसेट एडिशनल भी मिल जाते हैं, उसने तो पूरी कंपनी ही खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसे टाइम में ये सरप्लस एसेट जनरेट होते हैं। या ओवर ए टाइम पीरियड जब प्रोडक्ट की डिमांड रिड्यूस हो जाती है परमानेंटली, तो सरप्लस एसेट जनरेट होते हैं या सरप्लस कैपेसिटी जनरेट होती है। ओके, मैंने जब फैक्ट्री डाली तो मैंने 100 लूम्स लगाए थे, अच्छा प्रोडक्शन चल रहा था, मेरा माल पूरा बाजार में बिक गया था, बट ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस मुझे मेरा प्रोडक्शन हाफ करना पड़ा, परमानेंट चेंजेस। तो मेरे जो 50 लूम थे वो सरप्लस हो गए मेरे के, क्योंकि अभी यूज नहीं कर सकता हूँ और जब तक ये परमानेंट पॉलिसी आ गई है तो मैं ये आगे भी यूज नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे लिए इट इज अ सरप्लस। Sir, I have a question actually. Sir, when we were talking about that 20 ton wala example, so someone said that we'll be calculating the value of the asset on the basis of 10 ton only. Why not 20 ton? But as you said, the remaining 10 ton would be surplus. So on what ground we'll be giving the value only for 10 ton? Why not for 20 ton? So we discussed at the time that market demand is reduced or competition is increased. But sir, again, sir, the remaining 10 ton asset would have some value, isn't it, sir? Sir, we are invested for 20 ton, na? हाँ, एसेट 20 टन की है, बट आप, मैं इसीलिए तभी क्वेश्चन पूछा था कि आप किस कैपेसिटी को पे परचेज करोगे, 20 टन के हिसाब से या 10 टन हिसाब से। योर एसेट is capable to generate 20 ton per day, but due to the permanent decline in the demand and over competition in the market, you are not capable to generate more than 10 ton. So there we can apply economic obsolescence, but rather than go for a 10 ton asset value, we should give 20 ton asset value after applying the economic obsolescence, because the client So must you have are trying purchased. to say you will find the replacement cost for the 20 ton and then applying the economic obsolescence. Absolutely, sir. No, it will also not work. No, sir. When the plant, Because when your asset is old, you will provide the depreciation over the 20 ton replacement cost. So Yeah, that is true. depreciation would be applied absolutely. Without depreciation, the value will not be coming into the picture. But the matter of fact is, we will be taking replacement cost new for 20 ton asset capacity, not for 10 ton. Sir, I have one question. हाँ, नहीं, वो मैं समझ गया. What do you mean by the replacement cost? Basically, the cost of the product. Let's say suppose if we are carrying out the valuation as on today. नहीं, मतलब वो सीधी definition क्या है? Replacement cost new is the cost of the product as on date. नहीं है, cost of the product नहीं है, cost of the asset. Cost needed to replace the wall-out machine. Cost of the asset having a similar equivalent utility. Absolutely. Okay. What do you mean by the similar equivalent utility? हमारा प्लांट की equivalent utility क्या है? Outcome should be same. That is similar equivalent utility. हाँ. So now जो प्लांट 20 टन पर डे का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और ड्यू टू द परमानेंट declinations in the market demand and competitions, it's only produce the 10 ton per day. So what is now equivalent utility?
That would be 10 ton only. So, But so if it is a 10 ton and you are finding the replacement cost, matlab you are deviating the depreciation, sorry, definition of the replacement cost. Sir, sir, So 1 minute, sir. Sir, when you are having plant capacity 20 tons, because of the market demand, you are producing only 10 tons. So you cannot directly apply replacement cost method in this case. Because the Why demand can we cannot what is because understand the definition? If demand you are is less. finding the reproduction cost first, okay, if you're finding the reproduction cost, then your step may be a right. Okay, you are providing the depreciation and then provide the economic obsolescence. But if you are finding the replacement cost, which is having the equivalent utility is 10 ton, you are finding the cost required asset for the 10 ton. So now, what is the difference? Reproduction cost minus replacement cost. Anyone idea? Reproduction 1 month cost. it may be Reproduction cost minus replacement cost equal to functional obsolescence due to the excess capital investment. May I? Right? Okay. अब पूछिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मुझे. Continue, please. Thirugalnam. Hello. I think so. नहीं मतलब आवाज बहुत कम आ रही है या क्रैक हो गया है. Okay, we will attend your questions some other times. But yeah, any doubt or any questions? Okay. Now, what do you mean by the off-balance sheet asset? So, the asset which do not reflect or appear in the balance sheet of the company. बताइए कौन सी एसेट कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी? Rental longer. The asset which is on the rent, which is on the lease or which is on the contract, वो asset कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, and that asset are classified as a off balance sheet asset. Any doubt? किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो? Okay. Age, effective age, physical life, economic life, balance life. Okay. What do you mean by the age and what do you mean by the life? Age क्या है? Number of years passed from the targeted life of मान लो if any machine नहीं is designed, targeted life नहीं. Age की definition में life नहीं आती. a machine designed for 20 years and if it has नहीं been नहीं. started चलो 6 simply years question back. पूछ लेता हूँ मैं आपसे. आपकी एज क्या है? मेरी age is 63. Sorry? 63. Okay, 63. कैसे काउंट किया आपने? From the time of my birth. From the time of the birth. Okay, That so was age और that was also saying नहीं मतलब आपने बीच में time लाइफ lapsed. पूछा किया. Okay. कोई Time बात lapsed, नहीं. that is the age of the machinery. from the Age date or of installation, chronological basically. age, it is a number of years which has been lapsed since the property originally built or placed in the service. मतलब you can count age from the 2 points. Actually, you can count from the age in the by the 3 points. One, originally built from the year of manufacturing. Yeah, based on the place in the service. Yeah, put in use. ये 2 पॉइंट से आप मैन्युफैक्चरिंग ईयर या प्लेस इन यूज्ड, ये 2 पॉइंट से आप किसी भी एसेट की एज काउंट कर सकते हो. या थर्ड क्या हो सकता है?
year of purchase, year of manufacturing, year of purchase, year of put in use. ये 3 पॉइंट से आप मशीनरी की एज काउंट कर सकते हो. कीप इन द माइंड के इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑलवेज एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ईयर ऑफ प्लेस इन यूज्ड, year of put in use, put in service. Okay. What do you mean by the effective age? Age and effective age. Effective age क्या हुआ? Effective age may be, sir, the actual age or actual machinery put in service based on the maintenance practices. Okay. Anyone else? It is the apparent age of the property in comparison of the new property like kind. Age indicate by actual conditions of the property. Means of age based on the condition or efficiency of the property. That is the effective age. अगर किसी प्रॉपर्टी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस अच्छा होगा, then its effective age may be a lower than the chronological age. Yeah, if repair and maintenance is a bad or not provided, then its effective age may be a higher than is a chronological age. सही है? Any doubt in the effective age? Then what do you mean the life? Life का मतलब क्या होता है? The estimated age, estimated is the life, sir. Estimated age at the time of production. Life का मतलब The period till which it will work and produce. accepted to be in a serviceable or available, physical available. Machine की life we can classify in a economic life, useful life and physical life. Okay? जब भी कोई मशीन नया नया खरीदता है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसका कम होता है and is producing more economic benefit to the user. It's called the economic life. Okay? So estimated period of time usually stated in number of years. The new property may be a profitable used for the purpose for which it was intended. Yeah, we can say total period of time over which asset is accepted to generate economic benefit for a one or more user. Economic benefit for one or more user. इसका मतलब क्या? कोई समझाएगा? For economic benefits for a one or more user. Single machine used by 2 or more companies or person. नहीं, एक कंपनी के लिए या एक यूजर के लिए इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो चुकी है, बट मे प्रोबेबल दूसरे यूजर के लिए इकोनॉमिक लाइफ इज स्टिल देयर. समझिए एक लेथ मशीन है विच इज एक्यूरेसी रिक्वायर्ड. यूजर फर्स्ट के लिए एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इज 0.001. ओके, 0.001% की एक्यूरेसी उसे चाहिए. ओवर ए टाइम पीरियड 4-5 साल के बाद उसकी एक्यूरेसी रिड्यूस हो गई 0.01% हो गई. 0.001 से एक्यूरेसी रिड्यूस हो गई 0.01 हो गई. तो उसके लिए तो ये अब काम का नहीं है, क्योंकि जो प्रिसीजन उसे चाहिए था प्रोडक्ट में वो नहीं मिलेगा ड्यू टू द रिडक्शन इन द एक्यूरेसी. But still there in the market someone who are looking the same type of the machine with accuracy of the 0.01%. तो उसके लिए तो अभी इकोनॉमिक लाइफ बची है. सही है. सो जब तक इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करता है फॉर वन और मोर यूजर, देन यूजफुल लाइफ. यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ इयर्स दैट प्रॉपर्टी एक्चुअली be used for his retirement
जब तक एसेट वर्केबल सर्विसेबल कंडीशंस में है उस लाइफ को यूजफुल लाइफ कहते हैं. इट मे बी ए जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट और नॉट. ठीक है, कुछ सालों के बाद में इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाए तब then also it is available for the use serviceable conditions में है. It is called the useful life. Okay, so it is a period over which asset is accepted to be available for use by the entity. Asset जब तक सर्विसेबल कंडीशन में है उस लाइफ स्पान को यूजफुल लाइफ कहेंगे. एंड थर्ड लाइफ दैट इज अ फिजिकल लाइफ. जब एसेट्स की सर्विसेबल लाइफ खत्म हो जाती है बट इट इज स्टिल फिजिकली अवेलेबल. वो कोई काम नहीं करती. मेरे पास गाड़ी है बट नॉन रिपेरेबल है, उसे मैं स्टार्ट नहीं कर सकता. इट इज अंडर द फिजिकल लाइफ. ओके, so the estimated period usually stated number of the years the property is a physically endure before destruction or fattings unusable condition purely due to the physical causes. Okay, फिजिकल लाइफ में उसकी सर्विसेबिलिटी खत्म हो जाती है बट एट इज स्टिल देयर. मेरे पास कार है, नई नई कार ली. इट गिविंग 3 किलोमीटर पर सॉरी 3 रुपीज पर किलोमीटर. मैं मार्केट में रेंट पे लेने जाता हूं तो दे आर गिविंग द 7 रुपीज पर किलोमीटर. मतलब कार इज प्रोवाइडिंग मी इकोनॉमिक बेनिफिट्स. कार की इकोनॉमिक लाइफ है. अब मैं यूज करता हूँ 5-6 साल के बाद में मेरी जो एफिशिएंसी है वो 8 रुपीज पर किलोमीटर आता है और मैं रेंट पे लेने जाता हूँ. दे आर आल्सो गिविंग मी 8 रुपीज पर किलोमीटर. मतलब मेरे कार की इकोनॉमिक लाइफ अब खत्म हो चुकी है. इट हैज अ स्टिल यूजफुल लाइफ. अब मैं कार को रेंट पे चलाऊं, रेंट पे लूं या खुद की चार लूं, मुझे एक ही है. आई हैव नॉट फाइंड एनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स. मेरी कार एकदम बंद पड़ जाती है, नॉन यूजेबल कंडीशन में आती है बट कार है मेरे गैरेज में फिजिकली. इट इज फिजिकल लाइफ. सो सेम बैलेंस इकोनॉमिक लाइफ. अगले कितने साल तक एसेट इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करती रहेगी. इट इज एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू. या बैलेंस यूजफुल लाइफ, अगले कितने साल तक एसेट सर्विसेबल कंडीशंस में रहेगी. इट इज एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू. ओके, एनी डाउट? एज, इफेक्टिव एज, यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, फिजिकल लाइफ, बैलेंस यूजफुल लाइफ, बैलेंस इकोनॉमिक लाइफ. इफेक्टिव एज रिपीट करना एक बार. सॉरी, इफेक्टिव एज. इफेक्टिव एज. आपने रेखा को देखा है, एक्ट्रेस? हाँ जी. कितने साल की लगती है? 50-55. 50-55 जैसी लगती है बट ओरिजिनली इट इज 75 और 76. क्यों? मेंटेनेंस अच्छी है. रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है. ओके, आप मशीन को खरीदते हो, मैनी कंपनीज आर प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और शेड्यूल मेंटेनेंस. सही है, तो वो मशीन की जो एफिशिएंसी है वो लॉन्ग टाइम तक बरकरार रहती है, उसकी कंडीशन अच्छी रहती है. तो अपरेंट एज of a property based on its actual conditions the effective age. समझिए, हम दोनों एक ही साथ में कार लाए थे 2021 में. आज क्रोनोलॉजिकल एज कितनी हुई कार की? 21 में दोनों ने कार खरीदी थी तो हाँ जी, ये 4 इयर्स हो गए. 4 इयर्स हो गई. 4 साल में मैं कभी भी कार को गैरेज नहीं ले गया. सही है, तो ऐसे मेरी कार दिखती है कि जैसे 10-12 साल पुरानी कार. बिकॉज मैंने 4 साल में कभी ना तो उसका ऑयल बदलाया, ना फिल्टर बदलाया, ना कुछ किया है. तो उसकी एज तो 4 साल है बट बेस्ड ऑन कंडीशन ड्यू टू द लेक ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऐसे लगती है जैसे 10-12 साल पुरानी है. तो इट इज इफेक्टिव एज इज 10 इयर्स. अब आप क्या कर रहे हो?
हर क्वार्टर में कार को गैरेज ले जा रहे हो, ऑयल चेंज करवा रहे हो, फिल्टर चेंज कर रहे हो, टायर चेंज करवा रहे हो, ग्लास साफ सफाई कर रहे हो, मतलब यू आर प्रोवाइडिंग ऑल द रिपेयर एंड रिक्वायर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो आपकी कार 4 साल पुरानी है फिर भी ऐसे लगती है जैसे 1 या 2 साल पुरानी हो, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग गुड प्रिवेंटिव एंड शेड्यूल मेंटेनेंस। और आपकी कार की एफिशिएंसी भी इतनी अच्छी है जैसे 1-2 साल पुरानी कार हो। तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज तो 4 है, बट ड्यू टू द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव एंड शेड्यूल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आपकी कार की कंडीशन ऐसे है जैसे 2 साल पुरानी कार। तो इट्स इफेक्टिव इज 2 years। या बताइए, इट इज अ मैटर ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव एंड शेड्यूल रिपेयर एंड मेंटेनेंस इफ कंपनी इज प्रोवाइडेड। दैट्स व्हाई हमने माइक्रो आइडेंटिफिकेशन और मैक्रो आइडेंटिफिकेशन में इसीलिए पढ़ा, अगर कोई कंपनी अच्छा रिपेयर एंड मेंटेनेंस देती है या शेड्यूल मेंटेनेंस है, उनके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के शेड्यूल्स है, दे आर अलॉटिंग सम कॉस्ट फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सो इट विल हेल्प अस टू यू। क्या हेल्प अस करेंगे, क्या एस्टिमेशन करने में, अभी बोला हमने, it will be help us to you for a क्या एस्टिमेशन है, बैलेंस इकोनॉमिक लाइफ और बैलेंस यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करने में इट विल हेल्प अस। ओके ओके, या एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, कोई भी फैक्टर अफेक्टिंग द लाइफ। तो टाइप ऑफ द एसेट, अगर कोई मटेरियल कंटेंट एसेट है जैसे लेथ मशीन या वेसल्स या रिएक्टर्स, उसकी लाइफ में भी हायर देन द टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन, जैसे है लैपटॉप है या सीएनसी मशीन है। ओके, देन फिजिकल कंडीशंस, अनयूजुअल साउंड, वाइब्रेशन, रस्टिंग, क्रैकिंग, इस पे आपकी सारी टोटल लाइफ एंड बैलेंस यूजफुल लाइफ। आपकी एसेट की लाइफ बेस्ड ऑन द मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और शेड्यूल मेंटेनेंस। आपकी मशीन की लाइफ बेस्ड ऑन द यूसेस, कितने नंबर शिफ्ट में चलती है, 1 नंबर शिफ्ट में चलती है तो इट विल बी हैव हायर लाइफ देन दोज हु आर ऑपरेटिंग इन द 2 शिफ्ट और 3 शिफ्ट, कितने शिफ्ट में चलती है। फाइनेंस रिसोर्सेज क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, जब तक रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है तब तक आपकी एसेट की लाइफ है, रॉ मटेरियल खत्म, प्रोडक्शन बंद, एसेट की लाइफ कंप्लीट। सही, जस्ट फिजिकल लाइफ। एंड मार्केट ट्रेंड और प्रोडक्ट साइकिल, जब तक प्रोडक्ट चलेगी तब तक आपकी एसेट की लाइफ है, जब प्रोडक्ट की डिमांड 0 हो गई, आपकी एसेट टिप टॉप है, देन ऑल्सो उसकी लाइफ कुछ नहीं है। सही है, जैसे जिन लोगों ने भी 2020 में मास्क बनाने के मशीन्स लिए थे, उसकी आज की डेट में लाइफ क्या है, अब कोई मास्क का प्रोडक्शन ही बंद हो गया, नो वन रिक्वायर्ड अ मास्क इन अ मार्केट, या जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी इट इज फुलफिल्ड बाय द स्मॉल प्लेयर्स। दो मशीन तो अच्छा है बट उसकी लाइफ 0, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रही है। सही है, अगर प्रोडक्ट में मार्केट में नहीं चल रहे तो कोई बनाएगा भी नहीं, बेचने जाएगा तो कोई खरीदेगा भी नहीं। ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, बुक कॉस्ट, रिटर्न डाउन वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। बताइए व्हाट यू मीन बाय द हिस्टोरिकल कॉस्ट। सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, या सर आप थोड़ा माइक के पास में आइए तो आवाज क्लियर आएगी। ओके, एनीवन एल्स? Purchase cost, sir. Purchase cost. At which time purchase cost? At the beginning. Monetary value. हाँ, monetary value, that is a good.
when the asset was purchased newly, उसको खरीदने में और पुट इन यूज में जितना खर्चा हुआ था, that is called the historical cost. The purchase price paid at the initial time of acquiring the asset plus any additional or subsequent purchases to put into asset into serviceable condition. जब एसेट नई थी, फर्स्ट टाइम सेल हो रही थी और फर्स्ट टाइम परचेज हो रही थी, उस टाइम पे खरीदने का जो खर्चा लगा था और एसेट को पुट इन यूज के लिए जो खर्चा लगा था, इट इज कॉल्ड द हिस्टोरिकल कॉस्ट. व्हाट यू मीन बाय द acquisition cost? Cost required to acquire the machinery, including all इंक्लूडिंग accessories. प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, जो वैल्यू है उसका, वो एक्विजिशन कॉस्ट है. सही है. जैसे मैंने कार खरीदी, नई कार 1 लाख रुपए में, इट इज माई हिस्टोरिकल कॉस्ट. उसी कार को मैं आपको बेच रहा हूं 50,000 में, तो 50,000 जो आप खरीद रहे हैं, इट इज योर एक्विजिशन कॉस्ट. उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट तो ऑलवेज 1 लाख रिमेन. आप किसी और को 30,000 में सेल कर रहे हो, तो थर्ड पर्सन के लिए 30,000 इज एक्विजिशन कॉस्ट. मतलब जब फर्स्ट टाइम परचेज होती है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट एक ही होती है, बट जब रीसेल होती है तो रीसेल में आपकी एक्विजिशन कॉस्ट डिफर हो जाती है. जिस बेस पे भी ट्रांजेक्शन हुआ, दैट इज एक्विजिशन कॉस्ट. सर इसमें सर जैसे इंपोर्टेड मशीनरी है तो कस्टम का क्लियरेंस का जो एक्सपेंस है वो भी इंक्लूड होता है ना? वो भी इंक्लूड हो जाएगा. आपको पुट इन सर्विसेबल कंडीशंस में कितने में पड़ी? आपने एक इटाली से सेकंड हैंड मशीन मंगाया $100 में, और आप $100 पे कुछ 100-200 रुपया यहाँ पे खर्चा किया, तो $100 प्लस 100-200 रुपीज इज योर एक्विजिशन कॉस्ट. बट आपने सेकंड हैंड परचेज की है तो एक्विजिशन कॉस्ट. अगर फर्स्ट न्यू मशीन परचेज की है तो इट विल बी योर हिस्टोरिकल कॉस्ट. सही है. देन बुक कॉस्ट. कुछ खर्चे बुक्स ऑफ अकाउंट में इसीलिए डाले जाते हैं टू गेन अ टैक्स बेनिफिट. ऐसे सारे खर्चे को बुक कॉस्ट बोलते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन. ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन इज अ ट्रीट एज एक्सपेंसेस, बट कंपनी इज नॉट पेइंग अ सिंगल एनी पेनी टू एनीवन. सही है, एक्सपेंसेस है बट कंपनी ने किसी को पे नहीं किया. वो एक्सपेंसेस ऐसे ट्रीट करती है टू अवेल टैक्स बेनिफिट. सो ऐसे सारे खर्चे इज कॉल्ड द बुक कॉस्ट. ओके, रिटर्न डाउन वैल्यू. डेप्रिसिएशन मेथड के लिए कंपनी एक्ट में स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये 3 मेथोडोलॉजीज डिफाइन की है. तो व्हेन यू आर अप्लाइंग द डेप्रिसिएशन यूजिंग द WDV मेथड्स, और जो आपकी बचता है, इट इज कॉल्ड द WDV वैल्यू. मतलब डेप्रिसिएशन कट हिस्टोरिकल कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डिडक्ट करके जो भी बचता है, इट इज कॉल्ड द रिटर्न डाउन वैल्यू, और से नेट ब्लॉक, और से कैरिंग अमाउंट, या से नेट बुक वैल्यू. ये सारे वर्ड एक ही है. कीप इन द माइंड कि भाई ग्रॉस ब्लॉक, हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, ये सारे एक ही वर्ड है. जब एसेट को परचेज किया था तो कितना खर्चा हुआ, जबकि आपका रिटर्न डाउन वैल्यू, नेट ब्लॉक, कैरिंग अमाउंट, ये सारे एक ही वर्ड है कि आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद जो बचता है, इट इज कॉल्ड द नेट बुक वैल्यू, या नेट ब्लॉक, या कैरिंग अमाउंट. सही है. सो ये सारे टर्मिनोलॉजी सेम ही है. कीप इन योर माइंड, आपके वो केस स्टडी में बहुत बार यूज होते हैं.
then item should be treated as a building or plant and machinery. तो कौन सी आइटम एज अ बिल्डिंग ट्रीट होती है और कौन सी आइटम एज ए प्लांट एंड मशीनरी ट्रीट होती है. So warehouse constructed by the SAC and hired for the storage purpose, it is considered as a not plant, or say it is a building. Electrical installation in case of the bank company is treated as a not a plant. Storage water tank constructed by person in connection of the business with supplying water to the farmer. Part of vehicles, such a body of the vehicles, not considered a plant. Road constructed within a factory premises is not considered plant. Compound wall or boundary wall around the factory unit is not considered as a plant. It is considered as a building. And these are very, very important terms, and you may get a 1 mark MCQ that whether this thing or this asset is considered as a plant or not, and you have to choose. You should concentrate on why these are not termed as plant and machinery and why these are termed as plant and machinery. You should keep this in mind. Yes, sir. Please continue. Sorry to interrupt. Okay. So these are the not considered as a plant. At the same time, what are the considered as a plant? So building with insulation wall as a freezing chamber, मतलब आपका जो पूरा cold storage है, it will be considered as a plant. कोल्ड स्टोरेज बनाने में जो थर्मोकोल या इंसुलिन बनाया गया, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ प्लांट. एयर कंडीशन इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन ए सेफ डिपॉजिट वॉल्ट ऑफ अ बैंक. एयर कंडीशंस जो बैंक के सेफ वॉल्ट में लगे हैं, इट इज कंसिडर एज ए प्लांट. इवन आपका जो पूरा सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है, इट इज कंसिडर एज ए प्लांट. ओके, कूलिंग कॉइल इंस्टॉल्ड बाय द शुगर मिल कंसिडर एज ए प्लांट. इसमें कोई डाउट नहीं होता है. Poles, cable, conductor, switchboard for distribution of the electricity is considered as a plant. Coal tub, cast iron pipes, vending considered as a plant. Safe deposit vault in a bank considered as a plant. इसमें जो एयर कंडीशन लगा होगा वो भी प्लांट एंड मशीनरी गिना जाता है. Sanitary item and pipe fitting in a hotel only considered as a plant. Loose tools which are directly and immediately connected with the running the SAC's factory. Okay, we are not discussing about the spare or inventory. Okay, inventory or spare part are not considered as a plant, but directly and immediately connected with running the SAC's factory is considered as a plant. Know-how in form of the printed literature considered as a plant. Technical know-how in form of the designs, drawing, chart, plans, processing data, literature, which basic consider as a plant. RCC chimney for a boiler consider as a plant. Fencing around a transformer or a machine for a production purpose consider as a plant. Okay. Foundation of the machine, yeah, any supporting structure of a machine consider as a plant. Okay. So these are the consider as a plant. So at the end of the making the inspections, आपने जो लिस्टिंग बनाया है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझे. आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई क्या प्लांट में कंसीडर करना है, क्या प्लांट में कंसीडर नहीं करना है. जैसे इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ऑल आर कंसीडर एज अ प्लांट एंड मशीनरी. वो बिल्डिंग में कंसीडर नहीं हो जाए. दो मेजर पार्ट इज अ स्ट्रक्चर. आरसीसी टैंक यूज फॉर द processing water and RCC tank used for a drinking water. तो बताइए, RCC tank for a processing water plant and machinery है कि building है? RCC tank for the drinking water to labor plant and machinery है या labor is land and building. हाँ, तो पानी पीने के लिए लेबर को पानी के लिए जो RCC tank है वो लैंड बिल्डिंग है. प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेस वाटर के लिए है वो प्लांट एंड मशीनरी. मतलब दोनों स्ट्रक्चर सेम है बट यूजेज इज अ डिफरेंट. सो उसकी कैटेगराइजेशंस विल डिफर. सही है.
So किसी को कुछ भी डाउट हो related to this chapter, we can discuss. आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर, या आप मैसेज कर दीजिए तो उससे भी समझ जाएंगे, मतलब इसमें लिख सकते हैं ना। या किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर जैसे कोई स्टील स्ट्रक्चर है, उस मतलब एक फैक्ट्री है उसमें स्टील स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो किस में काउंट होगा? प्लांट एंड कहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर है? मतलब कोई इंडस्ट्री है स्टील स्ट्रक्चर की बनी हुई है, तो वो किस में स्टील काउंट होगा? स्ट्रक्चर की बनी है, वो बिल्डिंग स्टील स्ट्रक्चर की बनी है, हाँ जी, हाँ जी। तो इट इज नॉट प्लांट, इट इज बिल्डिंग। ये सपोर्टिंग एसिड, बॉयलर को खड़ा करने के लिए जो एमएस स्ट्रक्चर, लेडर या प्लेटफॉर्म होगा, इट विल बी कंसिडर एज ए प्लांट एंड मशीनरी। बट जो कवरिंग बिल्डिंग है, दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टील स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। सर जैसे कोई सॉल्वेंट प्लांट है, हम्म उसमें उनकी मशीनरी वगैरह लगी हुई है हर फ्लोर में, हम्म तो और 3 स्टोरी का वो बिल्डिंग है, तो वो पूरा प्लांट एंड मशीनरी में काउंट होगा? नहीं, हर फ्लोर में मशीन है। कोई भी केमिकल प्लांट या सॉल्वेंट प्लांट का जो सीसी फैम स्ट्रक्चर, या जो कई बार क्या बोलते हैं, प्रीसेट प्रीफैब स्ट्रक्चर जो होता है, इट विल बी कंसीडर एज अ बिल्डिंग ओनली, नॉट अ प्लांट एंड मशीनरी। ओके सर एक और सर था केस, एक केस में हमने किया था, वो फार्मेसी इंडस्ट्री थी कोई, एंड जो भी उसके डोर्स थे देवर हैवी स्टील एसएस डोर्स थे, जितने भी उनके रैक्स थे स्टील एसएस के थे सब, तो वुड दैट बी अ पार्ट ऑफ प्लांट मशीनरी? और देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में उसके जो क्लोज डोर्स है, या उसे क्या बोलते हैं, एयर रूम्स बोलते हैं उसे, that are considered as a plant and machinery because it's a part of the process. कैसे? They are maintaining inner conditions environmental for the manufacturing purpose. Air pass बोलते हैं उसे। उसे सर फायर डोर्स बोलते हैं। अगर जैसे सपोज करो प्रोसेसिंग में जाते हैं तो उसको फायर डोर बोलते हैं। जो नहीं नहीं, वो फायर डोर अलग होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये डोर होता है, एक डोर खोलते हैं तो दूसरा नहीं खुलता आगे वाला, तो बीच में आप कपड़े बदल सकते हो, या ये बाहर की हवा अंदर नहीं हो जाएगी। तो पहला डोर बंद करोगे आप, देन ओनली अंदर जाने का दूसरा डोर खुलेगा। सो इट इज फॉर द आइसोलेशन पर्पस, के बाहर का एनवायरमेंट, हवाएं जो माइक्रोन्स कंटेन करती है वो अंदर ना चली जाए। सही है। सो ये सारे डोर्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आर कंसिडर एज ए प्लांट एंड मशीनरी। सर मॉल में जो लिफ्ट्स होती हैं, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? और सर वो प्लांट मॉल में नॉट ओनली लिफ्ट, एक्सीलेटर्स या एयर कंडीशनिंग प्लांट, एचवीएसी सिस्टम्स, वो सारा प्लांट एंड मशीनरी कंसिडर किया जाता है। Sir, one thing, in water treatment plant, there is some raw water storage tank. After that raw water storage, there are sedimentation tanks. Then there are filtration plants, and after that, goes to the underground tank for further distribution to the residents or the persons. Please clarify what part is plant machine and what part Entire is. plant, all the storage tank, which is a part of the water treatment plant, sewage treatment plant, or effluent treatment plants, are considered as a plant and machinery. Total WTB will be treated as a plant and machinery. Plant and machinery. Okay. All the tanks, all the civil structures or whatever. सर ये लिफ्ट कैसे प्लांट एंड मशीनरी में पकड़ते हैं? वो तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना। किसका सर? किसको? लिफ्ट, बिल्डिंग लिफ्ट। देखिए, बिल्डिंग लिफ्ट कहाँ पर है? मॉल में है। मॉल की बिल्डिंग लिफ्ट, सही है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। इवन आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग लिफ्ट भी नॉट कंसिडर एज अ बिल्डिंग। And one thing more, you just informed that the water supplied from a tank to the labor is considered part of building. Okay, yes. Water storage tank for the labor drinking purpose. Okay. When the tank is supplying water to the water treatment plant में से जो tank है वो water supply कर रहा है resident को, consumers को, that is treated in machinery.
I'm not able to understand this concept. देखिए Both are supplying water, drinking water, either to the worker or to the citizen or to something else. In one नहीं, case, वो you are कहाँ treating पे it as यूज होता है? मशीन अगर प्रोडक्शन या प्रोसेस में वाटर यूज होता है, देन इट विल बी कंसिडर एज अ प्लांट एंड मशीनरी। प्रोसेस में नहीं। अभी आपने बोला कि जो अंडरग्राउंड टैंक है, वाटर सप्लाई जो सिटी को सप्लाई कर रहे हैं, वो भी प्लांट एंड मशीनरी में आएगा। पर जो पानी टैंक में से वर्कर पी रहे हैं वो उसमें आएगा। बट बोथ आर द सेम टैंक्स। बोथ आर द सेम टैक्स, बराबर। मतलब दोनों बट का आफ्टर ट्रीटमेंट पानी एक तो एक टैंक ही में दोनों स्टोर। सेम काम करती है, ऐसा बोल रहे हो आप? यस, दोनों सेम करता है। वही पानी रेजिडेंट को जाता है, वहीं से वर्कर पीता है। देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ बिल्डिंग। इट इज नॉट देखिए, इफ इट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द प्रोसेस और प्रोडक्शंस, देन ओनली इट इज कंसीडर एज अ प्लांट एंड मशीनरी। अगर ऐसा कोई ड्यूअल आएगा, दैट इट विल बी नॉट। देखिए आपके जब व्हेन यू आर फाइंडिंग द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस या क्वालिटी चेक के लिए जो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ से भेजते हैं, दैट कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मगर मैं यहाँ से यूएस जाता हूँ कि भाई ये मशीन भी चेक करके आऊंगा, मैं थोड़ा घूम के आऊंगा, तो ये कॉस्ट मतलब यहाँ पे सिर्फ नॉट एक्सक्लूसिव जो एक्सपेंसेस किया है, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर द machinery inspection, so it will be a not part of the replacement cost. Any exclusive cost or structure which is used for the productions or processes will be considered as a plant and machinery. Okay, thank you. Okay, so we are taking a break, 10 minute का tea break, then we will start the next chapter. Yeah, बंसल जी है क्या? Yes sir. हाँ बंसल जी, 10 मिनट 15 मिनट टी ब्रेक लेते हैं, बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Okay, right sir. So friends, it is 3:35. We will take a short tea break of 15 minutes. Then we will start sharp at 3:50. Till then you can switch off your screens. 3:50 will be the